Hello guys, hello. Uh, Currently I am on a trade and hoping to hold that till it hit SL or hit TP, anything in between. I can, try to hold that if possible. Otherwise, let me set the second screen so that I can see this. On GBP JPY, it's falling since yesterday trade that I have taken here. My target was almost just here, uh, sorry, around here. I guess I get my 2 hour, but eventually price like fall down very good. So what we can do, we just don't do anything. We just have to be like in and out, वो important है. मुझे एटलीस्ट क्या करना चाहिए, आई हैव टू do one thing. When I close 90% of my trade on, you know to my TP और between TP और उससे पहले liquidity pool पे sometime, तो मुझे एटलीस्ट क्या करना चाहिए, when I rest of my पोजीशन, मुझे सिर्फ TPR तक नहीं जाना चाहिए, टेक्निकल टारगेट्स तक जाना चाहिए. So it will be good, I guess, because I see that today, since yesterday price was just GBP was just falling very aggressive, and I am not able to capitalize on that. मतलब मैं उसको कैपिटलाइज्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ. So like this, क्या फॉल आया है. हम्म, हाँ हाँ दे दो. मतलब मेरे हिसाब से तो इसको नीचे आना चाहिए, बट जो ये, आई मीन, जो चाइना और यूएस के बीच में जो टैरिफ वॉर चालू है, उसकी वजह से सच बताऊं तो पूरी मार्केट की वाट लगी हुई है. टेक्निकल्स तो काम ही नहीं कर रहे प्रॉपरली. कर रहे हैं तो एक दिन कर रहे हैं, दूसरे दिन वैसे तो प्रॉबेबली ये सारा खेल प्रोबेबिलिटी का ही है. बट ऐसे टाइम पे रियलाइज होता है कि वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द बिग पीपल्स. लाइक, समझ रहे हो, whatever the decision they are doing, the decision they are taking, because of that only we have taken so many losses, or our technicals are not working that much. I चाय बिस्किट खा रहे. Everything is just falling apart. I mean, little, so much shits. अच्छा खासा यहाँ पर मेरा ऑर्डर मैंने प्लेस किया था. इट्स अराउंड 3:45 p.m. and was going well, and suddenly I don't know what happened, but it just moved against me.
and currently I'm in a drawdown. So what we can do about it? Nothing. बताओ, क्या कह रहे हैं? बिस्किट ही खा रहे हैं लॉस के साथ। क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पर? थोड़ा सा, आई मीन 80% या 70% लॉस लेके निकल जाना चाहिए, या फिर मुझे वेट करना चाहिए? व्हाट यू सजेस्ट? मैं यहाँ पर स्प्रेड्स देखने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि समटाइम ना चीज़ें हिट नहीं होती हैं एंड स्प्रेड की वजह से आई हैव टेकन आउट। सो अभी तक तो नहीं टच हुआ है। हम्म, अब टच हुआ। सो स्टॉप लॉस हो गया। हाँ भाई, गया, सही गया। काफ़ी टाइम से होल्ड गया था, आई मीन यहाँ तक गया था ऑलमोस्ट 1 आवर तक, बट आई हैव टेकन अ लॉस। सो नो इशू, मे बी द market sentiments are not so good. Now, next what I need. Mm, दो रास्ते नहीं चले, सफर भी करना। So no biggie. I mean, I'm in a drawdown. There is no doubt about it. But what we can do about it? Nothing. Na? So just chill and relax.
आई मीन मैं सही बोलूँ तो आई वॉज pretty much confident actually, so much confident. Reason is simple, I tell you. I changed this to my M15 swing bullish, okay, and I did that because alignment H4 के साथ करना था. That is important for me to do it. And यहाँ पर as you can see it is bullish, you know, internally it was bullish. And what happened here is that during the uh, London Open it's bearish. Okay, here it is bearish. And so H1 stack to M15 is very high probability for me because I can, for surely I can say that most of my trades which hit TP are those who uh, stacked with H1. So that is very high probability to me. Even I said that on my outlook as well. If you follow me uh, on Discord, you can see that it can take some time. No, it's open very quickly, and I can go by this. And this is the thing. No, actually, I did not post it because when I post this, it was Frankfurt Open before, and after Frankfurt and after London Open, market shift happened. So I did not do that. आ रहे जाओ. Probability, I must say it is phase C first step. And actually if it did not come up here, it was, I mean technically देखा जाए it should be come to this one. But the war that is actually currently happening between US and everything, it made US dollar weaker and weaker because against में सारी चीज़ें हो रही हैं. एंड आई मीन यूएस के अगेंस्ट में अगर यूएस कुछ करना चाह रहा है देन चाइना इज डूइंग समथिंग, तो इसकी वजह से ना देर इज समथिंग हैपनिंग इनसाइड द मार्केट. आई मीन somehow US dollar become weaker and weaker. So that's why maybe that is the chance. That is why when what I say, when the price is very much aggressive, sometime what it did is that suppose we form this is the एक second I show you. um, I right हाँ see, this is the POI, this is the EQ zone. हाँ, यहाँ से यहाँ तक this is EQ. So हम लोग को ideally क्या सिखाया जाता है कि buy from discount, sell from premium, right? But होता क्या है, when price was very aggressive, like so it did not flat come to our discount. Sometime it just come up here and just moving other direction, like slightly pullback happen and then it's just moving up very aggressively. So maybe that's going to happen here. ये हो सकता है. बफर हो रहा है अब, ठीक है, अच्छा. सो मे बी द रीज़न इज सिंपल ये होने का कि आई वॉज वेटिंग, आई वॉज होपिंग दैट प्राइस विल कम अप हियर. बिकॉज अगर आप डिस्कॉर्ड में देखेंगे तो व्हाट आई पोस्टेड हियर इज दैट हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी बाइज है. लॉन्ग फेस भी इज गुड बट रिमेंबर दैट इज एक्सट्रीम, सो आई नीड टू मीडियम फ्रेम चॉप. मतलब यहाँ से बाय बहुत एक्सट्रीम हाई प्रोबेबिलिटी है बिकॉज ओवरऑल सिनेरियो ही बाय का चल रहा है, राइट? और मैंने यहाँ पे शायद से ऑन माई नोशन डैशबोर्ड मैंने एक चीज़ लिखी थी मॉर्निंग को व्हेन आई वाज डूइंग आउटलुक. हाँ, एक सेकेंड नीचे आके, हाँ, यूरो यूएसबी लुकिंग फॉर फेज सी और फेज बी. मतलब फेज सी भी देख रहा हूँ, फेज बी भी देख रहा हूँ. सो दिस वाज फेज सी एंड दिस वाज फेज बी. सो अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पुश हो जाता, इट डिड नॉट कम अप टू दिस पीओआई, आई माइट नॉट टेक दिस एंट्री. मैं फेज बी की तरफ लॉन्ग जाता बिकॉज लॉन्ग हाई प्रोबेबिलिटी है. बट यहाँ पे हो क्या रहा है, वो मार्केट यहाँ तक पुल बैक ही नहीं दे रहा है, नहीं दिया जहाँ तक आई वॉज होपिंग. सो दैट्स वाई ना मैं यहाँ पर इंटरनली प्ले करने की कोशिश कर रहा था. बट इट डिड नॉट हैपन एंड इवेंचुअली प्राइस यहीं कहीं से, आई मीन लाइक यहीं से प्राइस निकल गया.
So that's why I have taken it, because it is phase B. It's somehow against the momentum, against the swing. So taken the loss, and it was valid, I must say. I have no regret, because valid trade लेकर loss लेना is a good thing, rather than taking so many bad trades after one loss, which is my biggest mistake every time I do. So hope I'm looking not tired, because आज बहुत टायर्ड सेशन था. आई मीन कैजुअलिटी के अंदर फीमेल पेशेंट आ गई थी इमरजेंसी, उसको 2-3 घंटा तो उसको ही हैंडल करने में लग गया. आई वॉज सो टायर्ड. आई वॉज नॉट, आई एम नाउ. सो अब what I can do about it now? I have to be like, just to follow my plan. That's it. The simple rule is that I have to follow my plan. So here I don't think any I can, मतलब मैं ना, I know sell बहुत अच्छा चल रहा है, but I'm not able to find a good thing here, because if I do this, which most of time I do that, I mean, this is kind of a POI that I might, you know take a sell from, ले सकता हूँ M15 में. बट मैं अब वो सब फालतू चीज़ें नहीं करता. आई मीन आई एम होपिंग दैट इट, कमिंग वेरी एग्रेसिवली डाउन साइड समवेयर डाउन द लाइन, यहाँ पे ये होगा. एंड व्हेन दिस हैपन, आई विल ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दिस मूव. So that's why I am waiting here on H4 GBP JPY. And let's now, what is happening. uh, the thing is that now, maybe after this break, if it break with candle body, that means I will change my swing structure to, you know to this. I mean, as you can see, this is too big. Okay, ये बहुत बड़ा है, swing structure है. And the next swing structure which is about to come, it is very small. ये दो दो चीजें बताता है. एक तो वीकनेस बताता है, ये ऑर्डर फ्लो है. वीकनेस बताता है जब स्विंग पुल बैक या इंटरनल पुल बैक बहुत छोटे छोटे होने लगते हैं. ये वीकनेस बताता है कि सर्टन डायरेक्शन में जो मार्केट जा रही है, नाउ इट बिकम वीकर एंड वीकर. और दूसरा चीज़, ये मोमेंटम भी बताता है. अगर आप बिग बिग कैंडल सर्टन डायरेक्शन में देख रहे हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल पुल बैक्स, but the candle are too big like this one which is happening. So that is also the sign of, aggressive momentum, aggressive buying or aggressive selling. So maybe that's why. mm, और अगर see, still this is valid to, look to sell, I must say. Because what can also happen here on M15 is that we are currently bullish swing structure, but internally we are bearish. So what also can happen is that after sweeping this high, it can come down aggressively, because there is a news around 11:30 FOMC meeting. It's not FOMC, but FOMC meeting. So it is not that high probability, high impact news, but it will come. And maybe for that reason, it's creating so much, liquidity and so much ranging environment. So मस्त पानी चले जिंदगी बनाने के दीवाने. आई होप क्लियर आ रहा है, या फिर आई मीन, बिकॉज मुझे एक ही चीज़ का डाउट कंटिन्यूसली रहता है, दैट क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है. इफ इट्स क्लियर, दैट्स ग्रेट. इफ इट्स नॉट, प्लीज़ 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 गाइस टेल मी. ओके. मैं वही सोच रहा था, बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है ना न्यूज़ की वजह से, तब या मे बी दैट इज द रीज़न, बट स्ट्रक्चरली इट इज़ नॉट दैट.
GBP is going bearish completely, and EU is like full hell of a bullish. Now, what happened is just sweep this high, which is stronger, and if candle close inside, that will be great for selling. But if it not, our M15 structure, swing structure becomes smaller. Okay. Daily, the target, next target is this simple. Maybe because of that, there is nothing here to hold the price. I must say this was the unmitigated POI. It can hold that, but as you observe, it, it mitigates, so इसने अपना काम कर दिया है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है मिटिगेशन ने. So I don't think so कि there is something here, and it is also mitigated. So this is the target. That's why it's just banging downside. I'm talking about GBP JPY. I'm sorry, while I was switching between the pairs, I did not, you know, मैं बोलता नहीं हूँ. So I have to ना, ताकि आपको समझे. Suddenly you see something else and वो फिर confusion आता है. तो सिताने चले जिंदगी बनाने. कितने बार मिटिगेशन अलाउ रहना चाहिए? मेरे लिए तो एक बार भी नहीं. आई मीन एक बार ही इज इनफ है. अगर एक बार से ज़्यादा है तो आई डोंट फाइंड दैट मच इफेक्टिव, बिकॉज और वो इम्पॉर्टेंट है. अगर सपोज ये मिटिगेशन है और मार्केट ने हल्का सा हल्का सा ही किया है, एक टैप, एंड वो इधर आ गया है, देन आई कैन टेक इट. बट अगर वो यहाँ, फिर मैं सेकेंड टैप पे भी एंट्री ले सकता हूँ. सो मैं तब तक इसको फ्रेश जोन बोल सकता हूँ. बट ये एक हल्का सा टैप ने भी अगर इसको ब्रेक कर दिया है, सो दैट मीन्स ये जो डिमांड जोन था हैज़ डन हिज जॉब. इसने कर दिया वो काम. सो नाउ आई कैन कॉल दिस एज मिटिगेटेड. और दूसरा सिनेरियो है कि 50% जोन मिटिगेट हुआ है एंड प्राइस अभी इसको ब्रेक नहीं किया है, बट 50 जोन के बाद इट्स कमिंग डाउन. सो दैट टाइम ऑल्सो for me it is mitigated because it's already filled the 50% of the POI. But most of the time I wait for unmitigated POIs, because there that is the only thing that go towards most of the time TP on my trades. So that is the concept that I use, and that is actually a mechanical thing which Photon teaches, and I loved it. I see the result by myself only. So one दोनों से ताने चले जिंदगी बनाने. Range pivot London high. This was the London high, na? That was the London high that's taken. Asia had taken and just come and up. So what can happen on during New York? If this break, we can expect a pullback. Then it can go up. It can go up after that as well. We don't know anything. After taking out the, देखो मैं जो सिनेरियो बात कर रहा था, exactly this thing can also happen, and हाँ. एक मिनट, ये क्या प्रीवियस डे हाई को भी टेकन आउट किया? नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट. ऑलरेडी वो डिड दैट, एंड H1 and then M15. यहाँ पर what
what thing I can do is I can take my uh, I tell you, I can take my what is called LQEM4. I can do that. So for that I need to see this to be first. This has to be gone. So this is the M1. It's not M1 boss. I mean, it's a fractal break which is PVL failed for me, and it is very small one, but it is sometime because M2 में भी देख सकता हूँ I can, you know, there is nothing on M1. So M2 यहाँ पर what happened, I am going to take the entry. This will be my auto block कल help से क्या की help से now it's like melting, but on M2 see that after taking out everybody, just so what can I do is that this is my favorite tool, and including this FVG, and it is going to be my M1 entry if it gives me, otherwise no issue, because liquidity sweep is something that you know I know. मुझे मालूम है मेल्ट हो सकता है ना. See, I set the order book की हेल्प से एक्सट्रीम लिक्विडिटी स्वीप हो गई है. यस, हो तो गई है एक्सट्रीम लिक्विडिटी स्वीप, बट मेरे लिए वो कंफर्मेशन नहीं है फॉर मी टू सी दिस. हो सकता है दैट इज द गुड, बट फॉर मी इट्स नॉट दैट इनफ. कितना बुरा हुआ ना, मतलब टेकिंग आउट देन इट्स कमिंग डाउन. तो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, प्यार के दीवाने, मस्ताने चले दिस इज गुड. ठीक है. And now this is a continuation model that I can use, you know, अगर मुझे देता है एंट्री तो, बिकॉज तो फिर अपने एंट्री क्या लिखा है, कौन सा बेस पे ली है, कहाँ लिया मैंने एंट्री, लेने वाला हूँ. बेस क्या है मेरा, सिंपल बेस मेरा ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ. मुझे उसका कंफर्मेशन चाहिए बिकॉज मैं M1 में ज़्यादा आता नहीं हूँ और ना मैं आना पसंद करता हूँ. But when I see that something big liquidity sweep happened and it can drive the market towards the certain direction eventually, so that time only I go towards the lower time frame, and so I did that, and hoping that it tap me. If not,
just going to be melted down, you know, because पुल बैक होना ज़रूरी है ना, एटलीस्ट ऑन M1 में नहीं होता है तो व्हाट कैन आई डू। M15 में भी some people can take the entry directly, but there is no POI which can hold the price, so that's why I was just waiting and moving this as well at the same time, because मुझे नहीं पता है कि when the pullback is coming, so मुझे उस pullback के बाद ही I can start, you know, doing this, so it's now moving to like this। इससे धीरे धीरे हो क्या रहा है कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड होता जा रहा है, बट टिल 2 आवर तक जाएगा आई कैन टेक इट, बट अगर वो 2 आवर से कम होगा तो आई विल नॉट डू दैट, आई विल नॉट ट्राई टू एंटर ऑन दैट। एंड सो इसको थोड़ा साइड में करते हैं एंड यहाँ रखते हैं, वेट करते हैं, अगर वो पुल बैक आया तो ठीक, नहीं आया तो नो। टेक्निकल धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, पर ओवरऑल ट्रेडिंग अब तक इम्प्रूव नहीं हो रही। होगी यार, होगी, ज़रूर होगी। इट कैन टेक सम टाइम, बिकॉज सक्सेस अगर इतनी जल्दी सबको मिलने लगता इतनी कम एज में, तो वॉरेन बफेट जैसे लोग नहीं होते। ठीक है, सो अगर ये मुझसे छूट जाती है ये ट्रेंड, जो कि मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है, बट शायद हायर टाइम फ्रेम वालों को ये अच्छा ट्रेड मिल गया होगा, but if not, so what thing that I need to see this fractal break, and then again a new POI created for me to take the, you know, take the advantage MTF charge, so NTF लिख दिया मैंने, and now, you know, अभी मैंने लिमिट ऑर्डर जो था आई हैव डिलीटेड, बिकॉज मैं इसको और कैसे कैपिटलाइज कर सकता हूँ। I know my stop loss, I know everything. So what I need to say is that when price come to my, you know, inside my, you know, entry, I need to see this switch, you know, I need to see engulf candle on M1. When I see that, then only I put the stop order. Okay, there is some FVGs in between, price can take the order from there as well, and वहाँ से वो, you know, एक अच्छा ड्रॉप ले सकता है, बट मेरे लिए एटलीस्ट इट हैज़ टू कम अप लाइक दिस ईयर। और बिकॉज मैं, मेरा जो 6-1 का फिब लेवल है, नाउ इट्स लाइक, यू नो, नॉट गिविंग मी द एंट्री। ये अच्छी बात है दैट, यू नो, ऐसा फॉल डाउन देख के भी आई कैन, यू नो, होल्ड माई सेल्फ। अरे यार, यहाँ पे ले लेता यार, वहाँ पे ले लेता, ऐसा ले लेता, वैसा ले लेता, सब बंद करना है मुझे। बंद कर चुका हूँ ऑलरेडी, बट आई होप कल की तरह ये भी अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन अ लॉस ड्यूरिंग लाइव सेशन टुडे, जो ट्रेड में मैं ऑलरेडी था, and now I'm just waiting for mitigation of the uh, LQEM4 entry model, because वॉरेन बफे, पहले का वॉरेन बफे तो लेजेंडरी आदमी है, क्रैश के पहले सारे एसेट कैश करा है, कर लिया, अरे उसको सब मालूम है। अब इतना बड़ा आदमी जब बन जाता है ना, कोई भी हो, anybody, they become insiders, so they knows everything, what is about to come, what is about to happen, so उसका ऐसे ही है।
$350, यस, $350 बिलियन, ऑफ कोर्स यार, उसको मालूम रहा होगा, ट्रम्प, इलॉन मस्क एंड एवरीबॉडी नोज दैट उन लोग के भी बहुत सारे कैश कर लिए होंगे वो लोग, बट आई डिडंट नो दैट दिस न्यूज़, सो थैंक्स फॉर टेलिंग मी. हाँ बट सी, पहले मैं क्या करता था व्हेन दिस थिंग हैपन, LQM एंड ऑल, somewhere down the line I put my, like, I do this is my new range, I have to, tap price, tap to this, and I have to take the order and sell behind here. But वो टाइम पे what is the silly mistake that I am doing? Actual high तो ये है, this is not. So what can happen when price take me into the trade, it can, come up here and just go down. So ऐसा होता था, that's why trying to put the SL behind a very, भले वो SL कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, doesn't matter, but always your SL has to be the protected area, so that you don't fear that much. Because ये अभी का जो trade था, you can see me, I have taken a loss with a straight face, there is no emotion, there is nothing involved, because why? Because I know my SL was in a protected area. If price reverse, it will, uh, not affect me that much. So it exactly what happened now, it tap into my POI, but I need to see what I need to see a bearish engulfing candle here. Okay, because as you see, there is so much imbalances here, and after just a tap, if this candle break this candle very aggressively to the downside, I might take the entry, but the stop loss will be far far from, you know but always wait for candle body close, because वो नहीं होता है ना. Sometime I do what I do, love to go towards M1, because वो कुछ अच्छा ही साइन देता है. Now it's giving me the entry that I, you know, so अब मैं क्या सोच रहा हूँ, what I'm thinking is, because there is imbalance, right? And it did not, mitigate whole zone, so it's just slightly mitigation, so doesn't happen anything. And there is a imbalance here as well, and because of that, price, come up here and just move upside. So that's why sometime, need a confirmation. If I set the limit order directly, I might, in a drawdown directly, and that's why I love to put a stop order. So what, इससे और क्या अच्छा हुआ, what exactly good thing happen here? Because of this candle, it's too big, and for that to be filled next candle,
इट कैन सेलर्स को बहुत पावर लगेगा. And in between, what we can do, there is one imbalance FVG, which we call it. And again, the second one is this. Okay, and the third one is this. अब दो सिनेरियो हो सकते हैं. मेरा ट्रेड यहाँ से लग सकता है, that will decrease my risk to reward, but ये पुश इतना एग्रेसिव होगा कि इट कैन कम डाउन लाइक दिस, यहाँ तक हो सकता है. सो मे बी दैट्स वाई. अगर मेरा तो भी मुझे आई एम गेटिंग 2.27 अगर यहाँ से, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी सेट द स्टॉप ऑर्डर बिहाइंड दिस कैंडल. एंड if not, somewhere down here, if price come, and from the last zone, last FVG give aggressive reaction, I have take, और मैं यहाँ कहीं से ऑर्डर लगाऊंगा, but stop loss will be here, and that way my risk to reward has increased. So that is the whole concept on how I take the lower time frame entries. Because see, मैंने lower time frame में I have taken so many losses. So I really genuinely bottom from my emotion, I must say. I'm telling you that I really do want to leave the M1, but मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, because I can see this is the high probability, and now things are pushing, and maybe the stop order can be triggered because of this, because this kind of a push I need to see. And it's ऐसे लिखा हुआ है, but actually the entry has triggered. And let's see. Oh god, अब एंट्री के बाद now is pushing up, like what the hell. but अब हम लोग एंट्री में आ चुके हैं. what what I can do, I can, like, you know my entry was here. यहाँ मेरी एंट्री है, and I'm hoping to target this low, and my SL is around here. I think I have to wait ना, मुझे वेट करना चाहिए था, but जस्ट मेरी थिंकिंग सेम है सेल, बट आपके जैसे एनालाइज नहीं है. बट मुझे लगता है कि मैं ट्रेड लूँगा तो सक्सेसफुल होगा. क्या करूँ, ट्रेड लूँ या अपना अंदर कुछ चेंज करूँ? ऐसा नहीं है. अब जो जो तुमको चेंज करना है, यू कैन डू बाय योरसेल्फ. व्हाट कैन आई से मैन, आई मीन रियली, व्हाट कैन आई से. अब अब हम M1 में है ना, सो दो चीज़ें हो सकती हैं M1 में, कि if this, because M1 में I am too conservative. मैं M1 की एंट्री में बहुत कंजर्वेटिव रहता हूँ. when this M1 boss happen, I might reduce my SL to like this, I might, if this break with candle body. Otherwise my stop loss is like here, because थोड़ा सा हुआ मिस्टेक, आई मीन स्टॉप ऑर्डर डायरेक्ट लगा. what I was actually have to do it, मैंने यहाँ पर कहीं लगा दिया था. I have to wait it, but यही होता है लाइव सेशन में, I'm not aligned with it, everything is, you know that's why. कोई बात नहीं. 6:30 happen, no?
LQEM ओ लॉस देखना तो पड़ेगा। इस टाइप के कैंडल होते तो इट विल बी गुड, बिकॉज एज यू कैन सी मैं इस तरह की एंट्री की बात कर रहा हूँ। सी this candle engulf this one, so my stop order like this, यहाँ से I will put it and SL was like here, so that maybe my risk to reward will be decreased from there and वो better होता, but due to लाइव सेशन और मोबाइल में करना हर चीज़, तो मैं ना बहुत कंफर्म नहीं कर पाता हूँ चीज़ों को। सो नो इशू, यहाँ मेरा एंट्री होती लाइक दिस, आई शो यू। मतलब ये जैसे कैंडल क्लोज होता, आई विल लाइक दिस एंड द सेल वाज सेम and target was like this, so that way it was 2.53 not 2 hours, so that's way ऐसा मेरी एंट्री लग सकती थी एंड कोई बात नहीं, ये लग गई। और अगर M1 बॉस होता है, बिकॉज आई हैव टू बी एग्रेसिव, मुझे M1 में ज़्यादा रिस्क लेना नहीं, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वांट टू टेक लॉस on M1, so if this M1 boss happen with candle body close somewhere here, I will reduce my risk, at least 35% or 40%, होता। अभी तक स्नाइपर मत बोलो यार, स्नाइपर स्लेयर तूने ली क्या एंट्री? इट्स नॉट अ स्नाइपर, आई मीन some people like वो लिमिट ऑर्डर एफवीजी पे लगाते हैं, they might are good, but I like to see more confirmation, so that's why my risk to reward is very compressed most of the time, but I mean I like the way I trade, because इस पे results आ रहे हैं तो why I have to you know follow somebody else or do something stupid in between। भाई फटी हुई तो है, सही बात है, फटी तो मेरी भी है। आई मीन आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ ट्रेड लेना चाहिए था, मे बी बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैपनिंग, आई माइट टेक द लॉस स्लेयर, आई माइट, बट मेरी स्ट्रैटेजी में ये बात है कि आई हैव टू टेक इट, आई हैव टू टेक इट, अदरवाइज कोई वो नहीं, नो इफ नो बट। लेट्स होप ये बॉस होगा विथ कैंडल बॉडी, बिकॉज वो सिर्फ स्वीप के साथ आई विल नॉट डू दी मैं रिस्क को छोटा नहीं करूँगा, बिकॉज स्वीप के बाद व्हाट कैन हैपन, इसको स्वीप करता है फिर देन इट कैन सम टाइम कम डाउन, ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। सो आई नीड टू सी दिस टू दिस कैंडल हैज़ टू बी क्लोज, candle body close from this boss, so yes, after boss we expect a pullback, it can happen, but this become a protected one, so you know I can put myself behind this, but I have to give some room, or I have to give a FPG room, so that price will while coming sweeping this high and take order from the FPG and it come down, but now I don't think so it going down। I mean just let it be ना। चलो फिर आई थिंक माय सेशन इज अबाउट एंड, सेशन एंड करते हैं यार। सी SL होगा स्लेयर, do not be like this, you have to be a rule, you have to try to be some कुछ rules बना लो, you have मतलब जैसे मेरा rule है कि I have to take 3 trades a day, फर्स्ट with 1%, सेकेंड with half, ओके, एंड थर्ड में फिर उससे कम करता हूँ, सो दैट वे
मैं बना रहता हूँ मार्केट में, एंड मैं वही सजेस्ट करूँगा। ऐसा मत करो, डरो मत, डू नॉट स्किप योर potential trades, even if everything is not aligned. You can blame to, Trump tariff and everything, but if your technical is telling you that you have to do this, you have to do it. अगर ट्रेड मिल रहा था तो आई थिंक यू हैव टू टेक इट आफ्टर लॉस एज वेल। जैसा कि देखा आपने, सेशन में आई हैव टेकन अ लॉस, एंड सेशन में आई हैव टेकन अनदर एंट्री which is according to my plan, and now I'm just, try to be calm. I see it's, uh, into a drawdown. I see my PNL as well, because I don't want to see it, but I can see it, and वो अच्छी बात नहीं है, but कोई बात नहीं, चलो, just focus on setup. Of course man, of course, 100%, 200 नहीं, actually 1000%। चलो फिर चलते हैं, बाय, विल मीट यू टुमारो। और इसका जो भी अपडेट होगा, इफ आई हैव टेकन अ लॉस, you guys already see that. If I have taken a win, I will post it. Most of the time I do not post the losses, because I find why I have to, like, डालना चाहिए, वो भी डालना चाहिए ना। चलो, telling you take it and take it, yes, 100%। if your setup telling you, just take it, do not skip it। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आई मीन टुमारो। सो तब तक के लिए टाटा।